I am your host, Slim bin Muhammad Rafi, and here is your YouTube channel, Zamir Universe. So today I am going to tell you about the story of a very unfortunate country where the army has, along with the help of the judiciary and some dirty politicians, the robbers, opportunists, the beneficiaries, from the times memorials, they are the one who have been traitors. And all these, these people, you find them from Daltana onward to Lagaris, to even, these, Matab Ali and Babar Ali. And all these people which you find here are the rich people, the Sardars. And, they are the one who are the cheats, they are the one who helped the British, and then that continued, the whole Indian continent. Actually, in fact, there was no such thing as a state of India. It was a continent. And the first time it became a Hindu state or an Indian state is after the partition. So this nonsense they talk about it, that, Pakistan is carved out of India, is stupid, idiotic. There are more than 600 Maharajas. There were small, little, tiny things in that continent. So from Nepal to all the way up to Khyber and Kabul, they were all that Indian continent. And, one should wonder. And if you want to get rid of the cancer, which I think the Pakistani establishment, the state actors, all people have many names for them, call them armies, and they think there are few generals. Unfortunately, it's not the generals alone. It is the whole institution. It's the same thing in the judiciary. They are the most dishonest, corrupt, and I will see that then how, unless you get rid of the cancer and, take every root, every small cell of this cancer, it will spread again. And this is what has been going on in the last 70 years. People have been chasing the wrong people to make this Pakistan great again. And I think Imran Khan, unless he deals with these... ये चंद जर्नैल थे 1956 में भी, ये चंद जर्नैल थे 1971 में भी, ये चंद जर्नैल थे 77 और 79 में भी, ये चंद जर्नैल थे 99 में भी और उसके बाद भी। ये चंद जर्नैल हैं जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाया हुआ है। ये इदारा है, ये इदारे की पॉलिसी है, सबको प्लॉट मिलते हैं। कितने अफसरान हैं जिन्होंने कुछ नहीं हो सकता रिजाइन किया हो या कुछ का कोर्ट मार्शल हुआ, इस इदारे में रहते हुए अगर आपको कोई लगता है कि इस ट्रेनिंग के बाद जो काकूल में होती है या ओटीएस में, जिसके अभी हमारे ऊपर एक मुसीबत आई हुई है, इस ट्रेनिंग के होते हुए आपको लगता है कि इनमें कोई इंसानियत बचती है, कोई पाकिस्तानियत बचती है, कोई हिब्बुल-वतनी बचती है, तो आप गलत हैं। इस टाइम इदारा लड़ रहा है। अगर फर्दे वाहिद होता तो अब तक फर्दे वाहिद को उठा के इदारा बाहर फेंक देता। एक जहनी बीमार शख्स इदारे का सरबराह बना हुआ है। उसने मुल्क की तबाही तो निकाली हुई है, लेकिन इदारे की इजारादारी भी उसने खतरे में डाल दी है और इदारे को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अनपॉपुलर कर दिया है। क्या इदारे के अंदर से रिस्पॉन्स ना आता अगर ये कोई इदारा होता? ये इदारा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इस बात पे मैं इस हद तक अग्री करता हूं कि आर्मी चीफ की ताकत ऐसी है जैसे जमीन पे खुदा आ गया, ऐसे ताकत दी गई है उसको। मैं हमेशा सवाल पूछता हूं, अल्लाह माफ करे, कि आर्मी चीफ अगर कैमरों के सामने किसी बंदे को गोली मार दे, पाकिस्तान के कानून की कोई एक शिक मुझे बता दें जिसमें हो कि फिर आर्मी चीफ को सजा हो सकती है और ये वाला इदारा आर्मी चीफ का एहतसाब कर सकता है। आपको एक भी शिक नहीं मिलेगी और एक भी ऐसा इदारा नहीं मिलेगा। इतनी ताकत किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, वो खुदा बन बैठता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये कहना कि चंद जर्नैल है, मतलब हर 3 साल बाद फिर चंद जर्नैल, फिर 6 साल बाद चंद जर्नैल, फिर 11 साल बाद चंद जर्नैल, हमेशा रहते चंद जर्नैल ही हैं टॉप पे। लेकिन इस इदारे से कोई एक ऐसा अच्छा जर्नल भी आपने कभी आते हुए देखा है जिसने आगे आगे जमहूरियत को स्ट्रांग होने दिया हो, फौज को पीछे की? Two institutions and deals it so harshly. And that's one is judiciary, where an ordinary man to the top man can get an equal justice, and the other is the armed forces. And you should change the names of these armed forces, should take them just the border security, and unless you take the powers of the powers, they play God. And no matter what name you change, what person you change, what shape you change, you are going to face the same thing unless and until you get rid of this judiciary once for all, and you get rid of these, and just put them back into their security. That's the borders alone and nothing else. And rotate this, even power, and split it into 5. Rotate it every month or every year between the artilleryman and with the air force, and the air force with the naval, and the naval with the the chief of army staff, and then the senior most
I think, have the people in the army generals and who are in transfers and in selections. So you have at least 10 to 12 people, so every month you can change them. So then nobody has a big thing in his head to exploit and just become and try and play God and then just say that just obey me and move everything around him. Don't ever do this to a judge. Number 1, never stay seated when addressing the judge. Look, dude, I didn't do it, all right? Hey, number 2, never refer to the judge as dude, only your honor and nothing else. Sorry, Your Honor. Counsel, keep your client in check. Please, you're making this so hard. Number 3, don't act out. The judge notices when you're being a temperamental jerk. All right, Mike, so what do you want me to say to the guy? Nothing. Number 4, never speak to the judge unless asked to. Let me do the talking otherwise. Your Honor, I don't like you or your client very much. I know. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर